Welcome or welcome back to my channel. And you guys are assuming that what I am doing, like I'm doing a vlog, and that is gonna be my room makeover vlog, because you can see the whole situation of my room. This is my room, and we are going to paint it in different color. So we are changing the whole look of my room and also of my house. Like that partition, that is the veranda, we can say, we called it always. So yeah, so मैं अपने रूम को एक मेकओवर दे रही हूँ. दैट्स वाई आई थॉट दैट आई शुड मेक अ व्लॉग ऑन इट, बिकॉज आई विल बी डू so much Misho haul on it, and that's why stay tuned and get ready to see a new look of my room. I know you haven't seen my room before that, but I thought, why not? This is the right time to share this. So this is my whole room. That is the bigger room which we are having. So ये जो है ये तो एक लिविंग रूम टाइप से है. Like we can say it's a living room, but ये मेरा छोटा सा रूम है जो कि मैं आपको बैक कैमरा से दिखा दूंगी all over what is the condition going on like in my room right now. So yeah. Just flip the camera. Okay, so guys, that is my room. That is the entrance of my room, and that is the whole situation. Like this is my room, and we have the blue color in it right now, but we are going to change it in the beige or cream or the aesthetic color that I seen on Pinterest. What is called Pinterest? Yeah. So मैंने वो Pinterest पे देखा था, and आजकल चल रहा है ना, that is so in trending, like some kind of a beige and इस टाइप से aesthetics thing. यहाँ पे ये window open होती है, and this is the road which is going to the outside from our colony. So yeah, that's all about it. अभी तो आप हालत देख लो कैसे कचरा हो रही है, but फाइनली एंड डेफिनेटली यू विल सी द होल रूम. एंड यहाँ से एक और ओपन डोर है जिसे मैं बंद रखती हूँ, बट अभी तो ये ओपन है. सो दैट इज़ द माई होल हाउस. अभी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, सो डोंट सी इट. आई विल शो यू ओनली द रूम. जब मेरे पूरे घर का मेक ओवर होगा तब मैं आपको और चीज़ें भी दिखाऊंगी, बट फॉर द नाउ दैट इज़ द सिचुएशन. बट यू विल सी that how I will change the whole room into a aesthetic one. So this is my whole room situation, and I'm shooting this video at 12 p.m. Sorry, 12 a.m. It's midnight, and this is the condition of my room, which is all over. The white paint has done, but the little bit paint that we actually want to just get that's reading. तो अब इसमें हम जो भी कलर चाहते हैं वो होगा. एंड सी दिस इट्स लुकिंग नाइस. पहले से तो अच्छा लग रहा है, वो ब्लू वाले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. ट्रस्ट मी गाइस, बट यू विल डेफिनेटली सी माय न्यू रूम. आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस. सो मिलते हैं जब पूरा रेनोवेट हो जाएगा. देन I'll just give you all over the look, and yeah, super excited. So I will give you the all over room tour, but this is now the condition of my room. This is painted in the white color, but then we will got this, which we want to paint this room in which color. So that's the whole scenario which is going on. So in my room, paint has done, and as you can see, it's looking so beautiful. I mean, look at this. I got my room in this cream color of paint. कह सकते हैं मैंने cream color का paint कराया है, and look at this finishing is really nice. So I'm going to clean my room, and yeah, everything has done, and now it's my time to just clean my room with jharu and everything. So I will just clean all the dust and the paint which is fall down on my floor right now. So you guys will be enjoying my cleaning, and after that I will decorate my room. So let's get started without doing any wasting of time. Is it's already clean, and मैंने बहुत मुश्किल से इस पूरे फ्लोर को साफ़ किया है. एंड लुक एट दिस. अब बिल्कुल सब कुछ साफ़ हो चुका है, एंड मैं यहाँ पे अपना ड्रॉर लगाने जा रही हूँ, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस तरीके से रखा हुआ है. अभी यहाँ पे गेट को मैं पूरा क्लोज़ कर दूँगी, मैंने कवर कर दूँगी विद कर्टन्स जब मैं कर्टन्स बाय करूँगी तब. एंड अभी मैंने इसमें सारा सामान रख दिया है. एंड ऑल्सो आई केप्ट सम थिंग्स ओवर हियर, लाइक लुक एट दैट. इस तरीके से ये पहले ओपन थी, तो मैंने इसमें ऐसे डोर्स लगवा के इसको क्लोज़ करा लिया. एक अलमारी टाइप से बना ली मैंने इसको, कवर्ड टाइप से छोटा सा, जो मेरे से सारा मेकअप ज्वेलरी के रखने के काम आ जाता है. एंड दैट्स आई
बॉट फ्रॉम स्मिटन, मतलब मैंने ऐसे ही बक्स में ट्राई किया था। ये मुझे कप किसी ने गिफ्ट किया है तो मैं इसको हटाती नहीं हूँ। दैट्स ऑल। अभी तो बहुत आपको एम्प्टी स्पेस लगेगा पूरे रूम में, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ क्यूट हार्ट दैट इज़ ऑल्सो गिफ्टेड फ्रॉम समवन एल्स। एंड या, तो अभी कुछ ऐसा सीन है। बाकी जब मैं पूरा डेकोरेट कर लूँगी एंड धीरे धीरे ही इसमें टचअप करूँगी, तो आई विल ऐड सम मोर क्लिप्स। ओके, सो लेट मी जस्ट फिनिश दिस वर्क। आई मीन, इसमें मैं अपना सारा सामान रख रही हूँ। एक में कैंडल है, एक में परफ्यूम्स आ जाएंगे, एंड सो मैनी थिंग्स दैट आई हैव टू डू। सो बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। बात करते हैं आप लोगों से कल। So hey guys, welcome or welcome back to my channel. So as you guys all know that this video is all about the room decor or room renovation, which is already done. I mean, I'm just talking about the painted part that already done, and room पूरा पेंट हो चुका है। बट आज मैं सारा का सारा अपने पार्सल्स जो हैं वो वहाँ टेबल पे रखे हैं, वो मैं ओपन करके अपने रूम में डेकोरेट करूँगी। एंड उसका हॉल भी मैंने डाल दिया है, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि आई एम श्योर अबाउट दैट कि ये जो व्लॉग है और ये जो रूम डेकोरेशन पार्ट है ये उस हॉल के बाद ही आएगा। एंड पीछे आप ये जो बैकड्रॉप देख रहे हो, ये जस्ट फेस्टिव सीजन के लिए मैंने कर रखा है। सो इसको तो मैं नहीं हटाऊंगी, बट हाँ, मे भी हो सकता है कि सबसे लास्ट में आपको इसकी जगह कुछ और देखने को मिल जाए। बट अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं बस जस्ट एक छोटा सा आपको इन शॉर्ट ब्रीफ दे रही थी, अदरवाइज यू आर सो स्मार्ट एंड आगे आप देख ही लोगे। सो दैट्स ऑल द रूम। मतलब इस तरीके से मैंने कर्टन्स टांग दिए वही पुराने वाले, बिकॉज अभी मेरा बजट नहीं है नए कर्टन्स लेने का, तो वो मैं बाद में कभी थोड़ा बहुत चेंज करूँगी तो आगे पार्ट में दिखा दूँगी। बट अभी आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये वाले भी पुराने कर्टन्स हैं, एंड इधर साइड पे भी पुराने कर्टन्स हैं। इधर साइड पे मेरी विंडो है, लाइक यहाँ पे मेरी विंडो है जो बिल्कुल रोड के साइड ओपन होती है, एंड ये वाली जो जगह है वो मेरा डोर है जो कि मेरे घर के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंट्रेंस पे ओपन होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रूम। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको क्लीन करना, एंड देन आई विल शो ऑल द स्टफ एंड आई विल